हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर एक नई वीडियो में। यह वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जो श्राउड ऑफ ट्यूरिन को जानने में रुचि रखते हैं। यदि आप नहीं भी रखते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रॉन वाइट नाम के व्यक्ति की एक खोज बताने जा रहा हूँ जो यकीनन आपकी सोच को बदल कर रख देगी। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम रॉन वाइट की ओरिजिनल स्पीच सुनते हैं, फिर मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा। Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right? That's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. And I assure you those men's lives have changed. दोस्तों, रॉन वाइट आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उन्होंने श्राउड ऑफ ट्यूरिन से थोड़ा सा कपड़ा ले लिया था। फिर उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई, क्या यह कपड़ा सच में 2000 साल पुराना है? क्या यह ब्लड सच में जीसस का है?
तब उन्होंने फैसला किया कि वह इस कपड़े के ऊपर लगे हुए सूखे हुए खून की जांच करवाएंगे। उन्होंने अपने साथ काम करने वाले लोगों से पूछा कि एक भरोसेमंद लेबोरेटरी कहाँ पर है। तब उन्होंने उन्हें बताया कि इज़राइल के यरूशलेम में एक लेबोरेटरी है जो सबसे भरोसेमंद है। यह जानने के बाद वह वहाँ गए और उस कपड़े को उन वैज्ञानिकों को दिया और कहा कि इसका परीक्षण करके आप मुझे क्या बता सकते हैं बताएं। तब उन वैज्ञानिकों ने उसका परीक्षण किया और क्या परीक्षण किया यह मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने उसे 72 घंटे तक केमिकल में डालकर बॉडी टेम्परेचर पर रखा। वैज्ञानिकों को लगा यह तो डेड ब्लड है, पर रॉन वाइट के कहने के अनुसार उन्होंने फिर भी उसका परीक्षण किया। फिर वह वैज्ञानिक एक दूसरे से हिब्रू में बात करने लगे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी बात का आश्चर्य हो रहा है। फिर उन्होंने वाइट से कहा, रॉन, इस ब्लड में सिर्फ 24 क्रोमोसोम्स हैं, परंतु सभी के पास 46 होते हैं, माँ से 23 और पिता से 23। यह बात आश्चर्यजनक है। फिर जो पता चला उसने सबके होश उड़ा दिए। वैज्ञानिकों ने दावा किया यह रक्त, मतलब यह ब्लड जिंदा है। इट मीन्स दिस ब्लड इज अलाइव। यह सब सुनकर चौंक गए। सबको पता था कि ड्राई ब्लड डेड ब्लड होता है। उस दिन यह बात गलत साबित हुई। फिर रॉन ने सभी को बताया कि यह कपड़ा श्राउड ऑफ ट्यूरिन का है। सभी ने विश्वास किया कि जीसस का ब्लड आज भी जीवित है। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह रॉन वाइट आर्कियोलॉजिस्ट की जीवनी है जिसे वह खुद बताता है।